Welcome back. It's very interesting now. You are having fun with this chapter. I followed the girl along the passage. An old fashioned from Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. Want to sit down? Asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. I stopped horrified. I was in a room I knew and I did not know. I found myself in the midst of the things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. Or because of the tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there. I don't know, but I scarcely dared to look around me. The girl moved a chair. I sat down and stared at the wooden tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. My mother will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have a cup? Thank you. I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back, just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. I remember she opened a box and took some spoons out. That's nice. That's a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. Oh, you know about them. She had turned round and bought me my tea. She laughed. My mother says it is antique. We have got lots more. She pointed round the room. See for yourself. I had no need to follow her hand. I knew which thing she meant. I just looked at the still life over the tea table. As a child I had always fancied the apple on the pewter plate. We use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it wasn't anything special. I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioning at me. Pewter plate. Fine. Here's a pewter plate, means a plate made of grey alloy of tin. Right? Fine. Now the explain starts. So writer followed the girl in the passage. There was a Hanukkah candle bar. Hanukkah is a feast of light, generally a festival in December. And there is a word cumbersome. Cumbersome means troublesome, unmanageable. And here's a word muggy. Muggy means humid. So right now, as this month of May, there's a humidity. So the protagonist, that means the writer, followed the girl along the passage. There was a Hanukkah candle holder which was hung next to the mirror. Writer remembered that that she never used it, as it was unmanageable, not able to. It was very troublesome than a single candlestick. So the girl requested to sit down. Then she opened the door of the living room, which she knew. It means. Sorry. So writer stopped and she was very much disturbed. She was standing in a room which she knew and she did not. She knew about this room and she did not know about it. She knew with the things and she did not knew with the room. So writer was standing in the middle of the thing. She did not want to see that they burdened her. Now the girl requested to sit down. Will you not sit down? So she does not want to sit. She wants to just see the things here and there. So she held open the door of the living room. They went inside. Inside, she followed her. Writer stopped. She got horrified. She was in a room, and she knew that she did not know. She knew means that she knew the things, old things, but she did not know
about this place. So writer found herself in the middle of the things, and she did not want to see that they would burden her. Maybe because of the way they were arranged, or the humid smell, the muggy smell in the room, the ugly furniture. She was scared to look at everything. She sat down on a chair which the girl pulled out of her. She looked at the woolen tablecloth. She rubbed it, and her fingers felt warm. She followed the lines of the pattern of the table. She remembered the burn mark that never repaired. She remembered that burn mark which had never repaired. That means the tablecloth, which was having a burn mark from her time, and since that and that particular time, today, since till then, that means present time, no repair went, as it is, no change at all. So the girl told her that her mother will back soon, and she asked would she like to have a cup of tea, but she answered, no, thank you. So writer looked up. She saw the girl put 2 cups of tea in front of her. She had a broad back just like her mother. As her mother looked from her back, she was looking the same. She poured tea from the teapot, and the teapot had a gold border on the lid. She opened the box and took some spoons out of it. The writer complimented the girl about the box. Oh, what is that? She complimented. She felt weird, means very awkward, hearing this her own voice. It was sounding different to her. As the girl turned to give her a cup, she asked if she knew about the box. She asked, do you know about something about this box? So, who knows? Writer knew everything about her old things. She just came to see the things. Nothing else. What she would do? To take the things back? That's the question. And this is a part of the interesting part of the story. So the girl turned to give her cup. She asked if she knew about the box. So she added, then she added that it's an antique. The writer, that means the girl said it is antique because her mother said it is antique, and they've got lots more. She told her to see, although the writer did not need to follow her direction. Though writer was not following her direction, what she was saying, because she knew what she is talking about. She knew all the things were belonged to her. Now see, the cupboard, the table, the tablecloth, the candlestick, all the things, even the plate, cups, all were taken from the girl of 15, from the writer's mother. And writer's mother was Mrs. S. Fine. And who has taken? Mrs. Darling. तो मिसेस डॉलिंग ने सारा सामान जो है सारा का सारा उन्हीं से उठा लिया. यानी कि एक चम्मच भी, इवन द स्पून वाज बिलोंग टू राइटर्स मदर. भूखे नंगे थे, ऐसा लगता था बिल्कुल गरीब. इट इज नॉट लाइक दैट, आई एम नॉट टेकिंग सेइंग लाइक दैट, बस ऐसा सारी चीजें उनकी थी. बताओ, आप ही बताओ, चीजें भी भैया उनकी. तो इसका मतलब हम सोचते हैं आजकल के ज़माने में ऐसे थे, पुराने ज़माने में लोग ऐसे थे, तो ऐसा भी नहीं है. पुराने ज़माने में लोग लालची भी थे, ले भैया ले दे रख ले. पर ये था कि पहले इतना नहीं था. पहले आई मीन अर्लियर कम्युनिकेशन वाज नॉट सो ब्रॉड. अब थोड़ा सा ऐसा हो गया. एनीवेज, so she knew she was talking about. She glanced over the tea table, then she looked over the tea table. She remembered about the fancy apple on the pewter plate. ठीक है, वो एप्पल का डिजाइन देखा उसने pewter प्लेट पे. So the girls shared that they used the plate for everything. Once they ate off the plate, they were hanging on the wall. The girl wanted to eat off that plate also. वो भी उस प्लेट पे खाती थी. Anyway, वो भी खाना चाहती थी उसमें, but it was not anything, कुछ खास नहीं था. So the writer found a burn mark on the table. टेबल को देखा था, burn mark था, वो वैसा का वैसे ही था. ठीक है, तो girl looked at her in a question. वो थोड़ा सा डाउटफुली उसे देखने लगी कि अभी भी जो है क्या नाम है, वो दाग अभी ऐसे का ऐसे ही है. There is no change at all. तो अभी तक हमने यही देखा
कि राइटर ने फॉलो किया उस गर्ल को, पैसेज में गए, रास्ते में जब घर के अंदर जा रहे थे तो घर के अंदर तो उन्होंने हुनक का कैंडल बार देखा, उसे याद आया कि ये अनमैनेजेबल था, इसे मैनेज नहीं कर सकती थी वो। गर्ल ने उससे बैठने को कहा, उस गर्ल ने कहा कि आप बैठिए थोड़ी देर, लेकिन वो नहीं बैठी, वो नहीं चाहती थी वो बैठे, ठीक है, क्योंकि वो बैठेगी तो उन चीज़ों के बीच में रहेगी, फिर वो चीज़ों उस पर बर्डन करेंगे। दूसरा शायद ये भी कारण हो सकता है कि बड़ा अजीबोगरीब तरीके से रखे थे, ऊपर से स्मेल सी आ रही थी उस कमरे से, भद्दे फर्नीचर थे, उन चीज़ों को देखकर तो डर भी रही थी, ठीक है। तो वो चेयर पे बैठी जो मैंने कि उस गर्ल ने उसको मैंने कि दिया, तो उसने वुलन टेबल क्लॉथ देखा, उसने अपने हाथों से उसे रब किया, थोड़ा सा उसे वार्म सा फील हुआ। फिर उसने जो है लाइंस को फॉलो किया, पैटर्न को देखती रही कि कैसे डिज़ाइन था, या उन दिनों को याद कर रही थी, ठीक है। फिर उसने 1 मार्क को देखा जो आज तक अभी रिपेयर ही नहीं हुआ। तो उस लड़की ने ये कहा कि उसकी माँ जो थोड़ी देर वापस आ जाएगी, क्या आप चाय पियेंगी? मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं कोई ज़रूरत नहीं, अब थैंक यू तो कहना ही था, अब दे देंगी तो पी लेगी बेचारी। एनीवेज ऐसा हो सकता था, पर व्हाट्सएवर। सो वो जो राइटर है उसने देखा कि जो गर्ल है उसने मैंने कि उसने उसे देखा कि गर्ल जो है क्या नाम है वो जो 15 एज ऑफ 15 जो गर्ल है, उसने 2 कप्स रेडी किए, सामने रखा, तो देखा उसके जो बैक है उसका ब्रॉड बैक है और उसकी माँ की तरह ही है, देखने अपनी माँ की तरह ही पीछे से। खैर उन्होंने चाय दी, ठीक है, टी पॉट में। जो टी पॉट था उसमें गोल्ड बॉर्डर था, उसके लिड, उसकी जो ढक्कन था उसमें गोल्ड बॉर्डर था। उसने बॉक्स को खोला, उसमें से कुछ स्पून निकाले, वो स्पून भी राइटर के, बॉक्स भी राइटर का, चाय का जो है क्या नाम है आपका टी पॉट भी राइटर का, बाप रे बाप, ये सारी चीज़ें उनकी। खैर तो जो राइटर था उसे कॉम्प्लीमेंट किया, बॉक्स तो बहुत अच्छा है। उसने थोड़ा, तो उसने अपनी आवाज़ सुनकर थोड़ा सा अजीबो गरीब सा लगा, तो थोड़ा अलग सा लग रहा था। तो गर्ल ने मैंने कि मैंने से कप दिया और कहा कि क्या आप जानते हो इस बॉक्स के बारे में? क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने इस तरह से बोला कि जैसा लगता है वो जानती हो। तो मैंने कहा कि हाँ ये थोड़ा एंटीक है, ठीक है, अपनी माँ के अपनी मेरी माँ कहती है थोड़ा एंटीक है। फिर उन्होंने रूम को देखा, ठीक है, और कहा कि यहाँ पर मैंने कि वो कुछ और भी कहना चाहती थी लेकिन कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि देखो फिर उन्होंने कहा शी टोल्ड हर टू सी अबाउट सॉरी, तो यहाँ पर जो है कुछ और भी कहना चाहती थी, क्योंकि उसने ये कहा कि हाँ दिस एंटीक नाइस बॉक्स है, थोड़ा ये एंटीक भी है, मदर सेज इट्स एंटीक, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि एंटीक है, कहते हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर राइटर 50 गर्ल ऑफ 15 सॉरी वो गर्ल ऑफ 15 दिखाना चाहती थी। तो उसने कहा कि अरे ये तो एंटीक है, हमारे पास बहुत सारे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पुरानी। फिर उन्हें रूम को पॉइंट किया, कहते आप खुद देख लीजिए। अब राइटर को क्या देखना था, वो तो पहले से ही जानती थी सारी चीज़ें, उनके अपने घर की, उनकी माँ जो है लेके आती थी, उसे अच्छे से पता था। क्या देखती हो, वो टी टेबल देखा, प्यूटर प्लेट देखा, उसमें एक प्यूटर प्लेट होता है, एक डिज़ाइन प्लेट होता है, उसमें एप्पल बना हुआ था, बड़ा खूबसूरत था। तो वो कहते हैं हम हर जगह इसको यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग है, एक बार खा लेते फिर प्लेट्स वहीं, फिर हम वहीं रख देते वॉल पे। वो कहते मैं भी बहुत चाहती इसे खाना, लेकिन उसमें कुछ ऐसा खास नहीं था। अब राइटर को ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। तब उसने बर्न मार्क देखा टेबल क्लॉथ पे, ठीक है, और उसे डाउटफुल देखने लगी, ये दाग अब्बे का भी ऐसे कैसे ही जला हुआ और आज भी इन्होंने कुछ नहीं बदला, मैंने जैसा सामान लेके आया वैसे यूज कर, उसे रिपेयर तक करने की उन्हें जहमत नहीं उठाई। अब आप इससे अंदाजा लगा लो क्या लाइफ स्टाइल चल रही है। Thank you and wait for my next video.